Good morning, class 2 children. Welcome to the online classes of Sunrise English Medium School. Myself, Mrs. Meenakshi Dhole. Today we will see the next chapter of grammar 14 prepositions. Chapter number 14 prepositions. What is the meaning of prepositions? Shabdayogi Avyeya means the definition of the preposition is words that establish the relation between noun and other parts of the sentence. Preposition is a word that comes before noun or pronoun and establish the relation between noun and other parts of the sentence. For example, at, through, near, out of, into, about, then after on, in, by, with, between, under, for, below. These all are prepositions. So the preposition is the word that एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और सेंटेंस के अदर पार्ट्स के साथ रिलेशन बताता है. That is called a preposition. First of all, we see this example. The plane took off at 8 a.m. The plane took off at 8 a.m. means the plane is subject, means noun. Then after they make a relation between plane to 8 a.m. At 8 a.m. means प्लेन जो है वो 8 बजे पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है. मतलब 8 बजे के प्लेन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशन बता रहा है. कौन सा वर्ड? एट. सो दिस इज अ प्रीपोजिशन. मतलब वो टाइम के बारे में बता रहा है. देन नेक्स्ट, रोमा पास द थ्रेड थ्रू द बीड्स. रोमा पास द थ्रेड थ्रू द बीड्स. मतलब बीड्स मतलब मोती, पास मतलब निकलना और थ्रेड मतलब धागा. थ्रू मीन्स जिसके थ्रू. सो रोमा पास द थ्रेड. रोमा ने थ्रेड पास किया किसके थ्रू? बीड्स. बीड्स के थ्रू. सो थ्रू इज रिलेशन दर्शा रहा है इन दोनों के बीच का. ओके, सो थ्रू इज अ preposition. देन Paul parked the car near the house. Paul is subject and subject. This is the house is object. So noun और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है? नियर. पॉल पार्क द कार नियर द हाउस. नियर मीन्स के पास में, हाउस के पास में. सो ये जो नियर है ये रिलेशन बता रहा है इन दोनों के बीच में का. सो दिस इज अ प्रीपोजिशन. देन द कैट जंप आउट द विंडो. कैट ने जंप किया विंडो से, आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर. तो आउट ऑफ दिस इज अ प्रीपोजिशन. Ritesh jump into the river. Ritesh jump into the river. So into is a preposition. Then I love stories about wizard and magazines. So about is a preposition. This preposition, this word show the relation between noun and other parts of this sentence. That is called preposition. Then we will see on the next page exercise number A. Choose the correct preposition for each sentence. We choose the correct preposition for each and every sentence. In this bracket, 3 prepositions given here. We write correct preposition on this blank. First, I will meet Ritu dash 5 o'clock. I will meet Ritu at. We write here at preposition 5 o'clock. Second, the teacher told us a story dash elephant. टीचर टोल्ड अ स्टोरी, किसी के बारे में, मतलब एलिफेंट्स के बारे में स्टोरी बता रही टीचर. सो किसी के बारे में के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट. अबाउट के बारे में. देन नंबर 3, रोहन डिड डैश द रिवर इनटू. वी राइट हियर इनटू preposition. रोहन डिड इनटू द रिवर. Number 4 is the students are dash the classroom. Students are over or on. This is the wrong. Inside means अंदर. The students are inside the classroom. Classroom के हम अंदर रहते हैं.
इनसाइड का मतलब होता है अंदर। देन नंबर 5, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। देन नंबर बी, fill in the blanks using the correct preposition from those given below. First is, in this box some prepositions given here, we add correct preposition on this blank. First is, Preeti stared dash the strange creature in the cage. Preeti stared at the strange creature in the cage. Number 2 is, Bobby could not choose dash a biscuits and an ice cream. Bobby could not choose between का मतलब क्या होता है बीच में, a biscuits and an ice cream. Number 3, Raghu was sick means बीमार, so he went to a doctor. Then number 4, Manu dropped his cap near his friend house. Near का मतलब होता है किसी के पास में. Number 5, the man waited dash the ऑपरेशन थिएटर. द मैन वेटेड आउटसाइड मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर, आउटसाइड मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर, किसी के बाहर मतलब आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर. नंबर 6, द कैट सैट अंडर द टेबल. कैट सैट अंडर द टेबल, सीट का पास्ट टेंस है सैट. नंबर 7, रवि वेंट होम आफ्टर 9 o'clock. रवि घर पर कब गया, 9 बजे के बाद. आफ्टर का मतलब होता है बाद में. 8 is, they went around the world in 80 days. Number 9, the dog fell into a pit. Pit means खड्डा. Dog कहाँ पे गिर गया, खड्डे के अंदर. Into means अंदर. Then number 4, the soldier got an award for bravery. Soldier किसके लिए award मिलता है उनको, for means के लिए, for bravery. Then we will see the number C, fill in the blanks to complete the composition. Use prepositions from the ones given below. So we write these prepositions in these blanks. First of all, at, on we write 2 times, in we write 3 times, behind we write 2 times, then next to we write 2 times, about and to. About, to and at we write only 1 time. Miss Nita is in the classroom. Miss Nita is in the classroom and some students is in the classroom. She is looking at the children. She is looking at these children and saying something to them. The children are sitting on the benches. On means ऊपर. The benches. They are writing in their notebooks. They are writing in their notebooks. वो अपने notebooks के अंदर कुछ लिख रहे हैं. The boy sitting in the front row is Rahul. This boy name is Rahul. He is sitting the first bench. A girl wearing a bow is sitting next to him. The girl wearing a bow is sitting next to him. She is Lily. She is Lily. Samarth and Ankit are sitting behind Lily. Then Soumya is sitting next to Samarth. 2 charts are hanging on the wall. 2 charts. This is fruits and vegetables charts. These 2 charts are hanging on wall behind the children. Behind means पीछे, children के पीछे. The charts are about fruits and vegetables. किसके बारे में है? About means किसी के बारे में, fruits and vegetables के बारे में. Okay.